Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the lesson for class 8, chapter number 12. Chapter number 12 of mathematics book. This is lecture number 2. We have already known now what is direct variation. I have tried to explain that if two quantities are in direct comparison, such that if one quantity is increased or decreased, the other quantity also gets increased or decreased by the same variation. That is called the direct variation, and I have shown you the simple formula for that. If two quantities are represented by x and y, then x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3, so on. This is how we can calculate the missing numbers there. If the value of one quantity is given, the value of other quantity has to be calculated. That we can find out by using this formula. Now I have also shown you question number 1 of exercise 12.1. Let us now move to question number 2 of exercise 12.1. Question number 2. Open your textbooks and see what is question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. आपको पता होगा जब हम घर में कोई कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें जो पेंटर होता है वो एक वाइट वाला वो पेंट लाता है, उसको बेस बोलते हैं, और इसमें वो छोटा सा ट्यूब होता है, वो कलर उसमें डालता है. तो फिर कोई भी कलर बनाने के लिए वो अगर मान लीजिए 5 kg उस बेस में 5 ड्रॉप्स डालता है तो एक कलर बनेगा. अगर वो ड्रॉप्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, 5 ड्रॉप्स के बजाय 10 ड्रॉप्स डालेगा तो कलर चेंज हो जाता है. तो जो कलर उसको बनाना था उसके लिए उसने क्या किया, उसने 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, रेड कलर उसको बनाना था, 8 पार्ट्स ऑफ बेस के साथ उसने 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिला दिया. ही मिक्सड 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस. अब अगर उसको और कलर चाहिए, मान लीजिए अगर उसने 8 पार्ट्स ऑफ बेस ले लिए थे, at the first instance he had taken the 8 parts of base and mixed 1 part of red pigment with that. Now he requires only 4 parts of base. 4 parts of base, क्योंकि कलर में उसको कमी पड़ गई, कहीं पर कुछ थोड़ा सा रह गया, उसको पेंट करना है किसी रूम में, तो 8 parts of base उसने पहले मिला दिए थे, उसके साथ 1 part of red pigment मिला दिया. अब उसको 4 ही पार्ट्स चाहिए, तो उसी हिसाब से उसको कलर जो रेड पिगमेंट कलर है वो भी उसी हिसाब से मिक्स करना है. तो आपको यहाँ देखना है what are the two quantities which are in comparison here. The two quantities which are in comparison in this question are parts of red pigment and parts of base. So we can prepare a table here. Make a table and divide it into 2 horizontal rows. Divide now into columns these horizontal rows. We are given parts of red pigment. Let us write parts of red pigment and represent it with X. The second column, parts of base. Let us represent it with letter Y. Now we are given he mixes 1 part of red pigment with 8 parts of base. So parts of red pigment are given here 1 and parts of base are given 8. In the following table, find the parts of base that need to be added. Now we have to see if he takes 4 parts of red pigment, how many parts of base he has to mix with it. Now parts of red pigment are given 1, 4, 7, 12 and 20. 1, 4, 7, 12 and 20. 1, 4, 7, 12 and 20. So values of x are given, 5 values of x, x1, x2, x3, x4, x5. But only one value of base is given here, y, that is y1.
we have to find out y2, y3, y4 and y5. We know that if parts of red pigment are increased, naturally the parts of base should be increased by the same amount. If parts of red pigment are decreased, the parts of base shall also be decreased by the same amount. So we know that x and y are in direct variation here. Here x and y are in direct variation. Therefore, the simple formula is x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 is equal to x4 by y4 is equal to x5 by y5. Now x1 is given 1, y1 is given 8, x2 is 4, y2 is unknown, x3 is 7, y3 is unknown, x4 is 12, y4 is unknown, x5 is 20, and y5 is unknown. So we have to find out the values of these y2, y3, y4, and y5. Let us now take this first equation, taking 1 by 8 is equal to 4 by y2. By cross multiplication, we get y2 into 1, that is y2 is equal to 8 into 4, that is 32. So with 4 parts of red pigment, we have to mix 32 parts of base. Then if we want to find the value of y3, we have to take these 2 parts, we have to make this equation 1 by 8 is equal to 7 by y3. Because 1 by 8 is equal to 4 by y2, it is also equal to this, it is equal to this also and this also. Taking 1 by 8 is equal to 7 by y3, we get, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हमें यहाँ निकलेगा, therefore y3 into 1, that is y3 is equal to 7, 8 is are 56. Similarly, we can calculate this y4, taking 1 by 8 is equal to 12 by 4 and cross multiplying them, you will get the value of y4. Then you can take 1 by 8 is equal to 20 by y5, you will get the value of y5. Hope you understand this question. Now let us move to question number 3. The rest of the values of y4 and y5 you will do it yourself, because this is very easy question. We don't need to waste our time now, because you can easily calculate this question, solve this question yourself. Question number 3. In question 2 above, if one part of red pigment requires 75 milliliter, ये इसी क्वेश्चन का आप एक और पार्ट इसके साथ ऐड करना है. Prepare the table here. Parts of red pigment. Let us represent it with X, and parts of base. Let us represent it with Y. Now we are given, if one part of red pigment is mixed with 75 milliliter of base. This is now given in millimeter, 75 milliliter. What we have to find out? How much red pigment should we mix with 1800 milliliter of base? Now second value of base is 1800 milliliter. We have to find out how many parts of red pigment we have to mix with this 1800 milliliter of base. The simple formula for this is now value of x1, this is x2. We have to calculate, we have to find out the value of x2, and y2 is also given. As we know, x and y are in direct variation. Therefore, x1 by y1 is equal to x2 by y2. This implies
x1 is given 1, y2 is 75 is equal to x2 is unknown and y2 is equal to 1800 mm. By cross multiplication, by cross multiplication, we get this is 75x2. 75x2 is equal to 1800 into 1, that is 1800, 1800. Or x2 is equal to 1800 divided by 75. Now, reducing it to lowest terms, 25 3s are 75, 25 7s are 175. This is 180. 25 7s are 175. 5 are carried. This becomes 50. 25 2s are 50. Now 72 divided by 3. Convert it into lowest terms. Both are divided by 3. 3 1s. 3 2s are 6. 1 is carried. It becomes 12. 3 4s are 12. That is 24. So we have to mix 24 parts of red pigment with 1800 milliliters of base. This is how we can solve these questions. These are very simple questions, easy questions. Move to question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. So what are the two quantities which are in comparison in question number 4? On the one side we are given the number of bottles, and on the other side we are given time in hours. I will just show the table for this question. The rest you can do yourself. Question number 4. Prepare the table. This is the table for question number 4. What are the two things which are in comparison here? One is number of bottles. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, और दूसरे साइड में क्या है? दूसरे साइड में है टाइम इन आवर्स. Let us represent it with the letter y. So we are given 840 bottles are filled in 1 hour. Number of bottles is given 840. In a factory, this is the soft drink factory, 850 bottles are filled in 6 hours. 840 bottles are filled in 6 hours. So in 6 hours, number of bottles that are filled is 840. How many bottles will it fill in 5 hours? We have to find out how many bottles are filled in 5 hours then. So time is given 6 hours and 5 hours, but value of bottles, number of bottles is given only 840 in 6 hours. We have to find out how many bottles can be filled in 5 hours. So the simple, since x and y are also in direct comparison, because you already know in 6 hours if in the factory, if the machine can fill 840 bottles, so when we reduce the time, if it works only for 5 hours, naturally it will fill up less number of bottles. So if one quantity is decreased, the other quantity will also get decreased. So x and y are in direct variation. So you will write here, since x and y are in direct variation, therefore x1 by y1 is equal to x2 by y2. x1, y1 are given, y2 is also given. You can easily find out the value of x2 by cross multiplication. Let us move to question number 5. I am just showing you how to prepare the tables, then it becomes easier for you to solve these questions. Question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times. So what are the two quantities in comparison in question number 5? A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times. If a photograph of a bacteria, you know bacteria is very tiny object which we cannot see with the naked eye. So we use microscope to make it visible so that we can see it.
we first use microscope. The microscope enlarges the shape of that bacteria, size of that bacteria. So the question is, if the photograph of bacteria is enlarged 50,000 times, not twice, not thrice, 50,000 times, then its length becomes 5 centimeter. If the photo of bacteria is enlarged 50,000 times, then its length seems equal to 5 centimeters. So what are the two things in comparison? Number one, number of times enlarged, number of times size enlarged, number of times size enlarged. Let us represent it by x, and the other side is length of bacteria in centimeters, length of bacteria in centimeters. Let us represent it with the letter y. So we are given, if the photograph of that bacteria is enlarged 50,000 times, then its length becomes 6 centimeter. 6 centimeter. Now what is the question? What is the actual length of the bacteria? What is the actual length of the bacteria? Actual length of the bacteria means when we don't enlarge it, we don't enlarge the bacteria. The original length of the bacteria. Original length of the bacteria means to enlarge it one time. Because if we multiply any object, any number by 1, there is no change in the number. For example, if its length is 2 centimeter, if we enlarge one time, it will remain 2 centimeters. So the original length of the bacteria means to enlarge it one times. Enlarge it one times. Enlarge in one times means it will remain, the size of the bacteria will remain original. Its length will remain the original length. There will be no change by multiplying it by 1. So if we have to find out the original length of the actual length of the bacteria, then that means we are enlarging it one times. There is no enlargement in the size of the bacteria. Enlarging one times means it will remain, the size of the bacteria will remain original, same as it has its own length, original length. It will remain the same when we enlarge it one time. So if we enlarge it one times, that will give us its original length. This is one thing we have to find out. If we enlarge it one time, that means we will achieve here the original length of the bacteria. यानी एक दफा जब इसको एनलार्ज करेंगे तो उसका मतलब है जो उसका ओरिजिनल साइज है वही निकलेगा. तो ओरिजिनल साइज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज, यहाँ पर वैल्यू फिर है 1, तो हमें निकलेगा फिर क्या इसका साइज निकलेगा. और दूसरा क्या निकालना है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स. फिर अगर इसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो फिर उस वक्त क्या इसकी लेंथ निकलेगी. ओरिजिनल लेंथ यहाँ निकलेगी. एनलार्जिंग वन टाइम मीन्स ओरिजिनल लेंथ, and if we enlarge it 20,000 times, what will be its length? Since you know that if we number of times enlarged, if we decrease this number, if it is enlarged 50,000 times, the size of the bacteria becomes 6 centimeter. Its length becomes 6 centimeter. जब 50,000 दफा इसको हम एनलार्ज करते हैं, अगर 50,000 से कम करके एक ही दफा इसको एनलार्ज करेंगे तो बताओ लेंथ क्या ज्यादा निकलेगी या कम. Naturally it will be lesser than this. So these two quantities x and y are once again in directive variation, because if we increase one quantity, the other quantity is increased by the same ratio. If we decrease one quantity, the other quantity will also get decreased by the same ratio. Since x and y are in directive variation, therefore x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3. Let us calculate only first value here. Since x and y, ये आप खुद लिखोगे, since x and y are in direct variation, therefore you know x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3. Or x1 is given 50,000 divided by y1 is 6, x2 is 1 now, y2 has to be find out, is equal to x3 by y3. Taking this 5,000 by 6 is equal to
taking this 5,000, 50,000 by 6 is equal to 1 by y2. We get by cross multiplication क्या निकलेगा 50,000 into y2, that is 50,000 y2 is equal to 6 1s are 6, or y2 is equal to 6 by 50,000, 6 by 50,000, or y2 is equal to 6 by 5 into 10 raised to power 4. 6 by 5 into 10 raised to power 4, because 5 has 4 zeros on its right. So it becomes 6 by 5 into 10 raised to power 4. That is y2 is equal to, divide this 6 by 5. If we divide 6 by 5, we will get 5 1s are 5, decimal, 5 2s are 10. So it becomes 1.2, 1.2, dividing this 6 by 5, you will get 1.2 divided by 10 raised to power 4. You can write this as 1.2 into 10 raised to power minus 4. क्योंकि आपने ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में होगा, उसका जो पावर होगा, अगर उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उस पावर का साइन चेंज होता है. डिनोमिनेटर में ये है 10 raised to power 4, तो ऊपर जब इसको ले जाएंगे ये -4 इसका पावर बनेगा. इसी तरह ऊपर से अगर कोई नंबर नीचे ले जाएंगे, अगर उसका जो पावर होगा तो जो उस पावर का साइन होगा वो चेंज होगा. अगर न्यूमरेटर में कोई पावर है 10 raised to power 4 या 10 raised to power 3, तो नीचे जब उसको ले जाएंगे तो वो 10 raised to power, अगर वो +3 है ऊपर तो नीचे बनेगा -3, अगर ऊपर है वो -3 पावर तो नीचे बनेगा +3. इसी तरह डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में कोई नंबर ले जाएंगे तो उसके पावर का साइन भी चेंज होगा. यहाँ ये +4 है, अब इसको हमने डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, हमें इसको न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. तो ये इधर +4 है तो ऊपर जाके ये -4 बनेगा. दिस विल बी द length of the bacteria if we increase it one time. That means this is the original length of the bacteria. Original length of the bacteria is 1.2 into 10 raised to power -4 centimeters. Because the length is given here in centimeters. We don't need to calculate it any further. Although we can calculate it. If we divide this 1.2 by 1,0,0,0,0, 10 raised to power 4 means 10,000. 10,000 से जब इसको 1.2 डिवाइडेड बाय 1,0,0,0,0, तो जब 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, जब 10 से किसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट से एक डिजिट ट्रांसफर हो जाता है राइट की तरफ. अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से, तो राइट से एक डिजिट ट्रांसफर होता है लेफ्ट की तरफ. लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट से एक डिजिट ट्रांसफर होता है राइट की तरफ. जब डिनोमिनेटर होगा 10, 100, 1000 डेसिमल फ्रैक्शन, denominators of the type 10, 100, 1000, 1 and any number of zeros. The simple formula is that if we divide any decimal fraction by 1 and with some number of zeros, say 1, 2, 3, 4 number of zeros are here. Number of zeros in along with this one is 4. So 4 digits from left side of this, from whole number portion of the decimal fraction will be transferred towards the decimal portion, right side. So there is only one digit on the left, but we have to transfer 4 digits. So it will become 1, 2 तो ऑलरेडी है राइट साइड पर, ये 1 भी आ गया राइट की तरफ. अभी हमें 3 डिजिट्स और लाने हैं, तो वो 3 डिजिट्स के बदले हमें 3 जीरो डालने हैं. फिर डालना है डेसिमल और लेफ्ट में डालना है 0. 0.0001 centimeter, that will be the original length of the bacteria. But we don't need to calculate it any further. You have to write it down in this. This is called the standard form. Standard form 1.2. When on the decimal fraction, in a decimal fraction only one digit is in the whole number portion, this is called the standard form. तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर चाहिए, मजीद उसको कैलकुलेट नहीं करना है. सो द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया विल बी 1.2 into 10 raised to power -4 centimeters. So hope you have understood this question. Same is the case with all the questions. These are very easy questions. I will just show you the tables here. You will calculate the questions by yourselves. Let us move to question number 6 now. Question number 6. In a model of ship, the
mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship. यानी एक तो एक्चुअल शिप है, समंदरी जहाज है एक्चुअल, और दूसरा है उसका मॉडल। जैसे हम खिलौने बनाते हैं तो वो तो मॉडल्स होते हैं, वो तो समंदरी जहाज हम बनाते हैं खिलौना, लेकिन वो समंदरी जहाज होता है लेकिन उसी जैसा होता है, उसी जैसा होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है। क्योंकि पेपर पर हम बनाएंगे कोई जहाज, समुद्री जहाज तो बहुत बड़ा होता है, जैसे हम इंसान की शक्ल बनाते हैं पेपर पर, वो इंसान जैसा बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन सिमिलर टू दैट फिगर, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं उसके हर पार्ट, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसके जो बाजू है, उसकी जो टांगे हैं, दैट विल बी द proportion, that will be in direct variation with the actual figure of the man or actual figure of any article. तो यहाँ भी एक्चुअल साइज और जो मॉडल शिप का जो साइज है, दे विल बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमें टेबल बनाना है इस तरह, साइज ऑफ एक्चुअल शिप का साइज मीटर्स में दिया हुआ है, साइज ऑफ एक्चुअल शिप, साइज ऑफ एक्चुअल शिप इन मीटर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एक्स से। फिर है साइज ऑफ मॉडल शिप, साइज ऑफ मॉडल शिप, वो तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि वो तो छोटा ही होता है मॉडल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। तो यहाँ पर एक्चुअल शिप का साइज, मॉडल शिप का साइज हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मॉडल शिप का साइज है 9 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल शिप का साइज इसके मुकाबले में क्या है, the mast in a model ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter. तो एक्चुअल शिप की हाइट जो है वो 12 मीटर है। ये तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है मीटर्स और सेंटीमीटर्स, यहाँ पर वो मीटर और सेंटीमीटर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ही लिखा है ये एक्चुअल साइज जो है मीटर्स में है और मॉडल शिप का जो साइज है वो सेंटीमीटर्स में है। तो नेचुरली ये मीटर जो यहाँ पर वैल्यूज आएंगे वो मीटर्स में, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगे वो सेंटीमीटर्स में। तो हमें करना क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, शिप की अगर लेंथ है 28 मीटर, यानी एक्चुअल शिप की लेंथ अगर है 28, तो हमें मॉडल शिप की लेंथ मालूम करनी है। You know that x and y are in direct variation, therefore x1 by y1 is equal to x2 by y2, you will get y2, but that will be in centimeters. जो भी आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा उसके साथ फिर आप लिखोगे साइज, therefore साइज ऑफ मॉडल शिप इज, जो वैल्यू निकलेगा उसको सेंटीमीटर साथ लगाओगे यूनिट। तो इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये टेबल बनाओ आप। Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. यानी एक तरफ है mass of sugar, weight of sugar, weight of sugar in kgs, weight of sugar in kgs, इसको रिप्रेजेंट करो x से, और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यानी कितने दाने हैं उस शुगर में, 2 kg शुगर में, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, लेट अस रिप्रेजेंट इट विद y। यानी छोटे छोटे दाने जो होते हैं, 1 kg हमने शुगर लाया, उस वो छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसकी काउंटिंग है ये नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, उन्हीं को क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो 2 kg में कितने क्रिस्टल्स है, अगर ये वेट ऑफ शुगर है 2 kg, तो इसमें कितने क्रिस्टल्स है, 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल्स, 9 into 10 raised to power 6। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। अगर शुगर 5 kg होगा तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, इसी तरह 12 kg अगर शुगर होगा तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो यू नो दैट एक्स एंड वाई, जितना हम ये वेट इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। मैं सिर्फ इसका एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये आप खुद लिखोगे, आपको आप ये पता है। देयरफॉर x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3, taking x1 by y1 is equal to x2 by y2, पहले हम यही निकालेंगे, we get, तो x1 का वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय y1 है 9 into 10 to the power 6 is equal to x2 है 5, और y2 का वैल्यू निकालना है। So by cross multiplication we get
ये आपको पता ही है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 2y2 इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 raised to power 6. 2y2 is equal to 5, 9 are 45 into 10 raised to power 6. Therefore y2 is equal to 45 into 10 raised to power 6 is divided by 2. So divide this 45 by 2. You will get 22.5 into 10 raised to power 6. 45 को डिवाइड जब करेंगे 2 से, यू विल गेट 22.5 into 10 raised to power 6. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, इस फ्रैक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, होल नंबर पोर्शन में सिर्फ एक ही डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ 22.5 जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है 2.25 into 10 raised to power 6। लेकिन ये हम कैसे एक डिजिट को लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, यू ही हमने एक डिजिट लेफ्ट से ट्रांसफर किया किस तरफ, राइट की तरफ। तो इसका मतलब है हमने इसको 10 से डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड करने से ही एक डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसफर होता है। हमने 10 से जब इसको डिवाइड किया तो ये तो हमने, ये बैलेंस नहीं रहा, ये तो आंसर जो है वो तो चेंज हो जाएगा। तो एक तरफ जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये निकला, लेकिन साथ साथ उसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है ताकि ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमने इसको 10 से डिवाइड करके ये 2.25 वैल्यू हमने यहाँ पर हासिल किया। अब उस 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो ताकि ये बैलेंस रहे। सो यू विल गेट द आंसर 2.25 into 10 raised to power in multiplication when bases are same, powers are added. यहाँ 10 और 10 बेस सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी 10 को एक ही दफा लिखना है, पावर उसको ऐड करना है। इसका पावर है 6, इस 10 का पावर है 1, तो 6 plus 1 is 7. You will get the number of crystals is 2.25 into 10 raised to power 7. This is the standard form to write the number of crystals. So I hope you have understood these questions. You can solve similarly question number 8, 9 and 10. You will just prepare these tables and calculate all the questions. I hope this exercise is complete now. You will be able to solve question number 8, 9 and 10 yourselves. Thank you.